Shravan Utsav for requesting me to speak on a very interesting topic, which is moon-like devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो मैं आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस श्रवण उत्सव में भाग लेने का अवसर दिया और स्पेशली जो आज का टॉपिक है जो गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विषय में. And I don't have any specific qualification, but I agreed to do that for my own purification. तो मेरी ऐसी कोई योग्यता नहीं है लेकिन मैं अपनी शुद्धिकरण के लिए सेवा कर रहा हूँ. I'm not yet a devotee. I'm only trying to become a devotee. मैं अभी तक भक्त नहीं बन पाया हूँ. मैं भक्ति पथ के रास्ते पे हूँ भक्त बनने की ओर. But by the mercy of the Vaishnavas, I can continue trying to do my services. And so hopefully by sharing some of the glories of the great Vaishnavacharyas, we can gain some of their mercy. तो इन महान वैष्णवों की गुणावली को बोलते हुए आशा करता हूँ कि उनके कुछ गुण मेरे में भी परिलक्षित हो. So maybe we could start with offering our respects and glorification to the acharyas. Spiritual masters headed by Srila Prabhupada. Shri Panchatattva and Shri Krishna Bhagavan as well. Om Agyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasudi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Budhaya Mahaprema Purvaivo Nirmakshate Dam Shupurusha Bhunkte Gunan Sudasa Sudasatmakaya Lankrishista Bhagavan Vacham Sime Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna. So we'll be speaking about two very prominent followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, 2 out of 6 Goswamis of Vrindavan. तो वृंदावन के 6 गोस्वामियों से दो जो प्रमुख थे उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे. And these are Srila Gopal Bhatta Goswami and Srila Raghunath Das Goswami. जिनके नाम है गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी. And
we'll speak little less on Gopal Bhatta Goswami and little more on Raghunath Das Goswami. तो हम लोग गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विषय में थोड़ी ज़्यादा चर्चा करेंगे. Not because Gopal Bhatta Goswami is less important, ऐसा नहीं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी मतलब कम महत्वपूर्ण है, but prominence in Sri Chaitanya Charitamrita is given to Raghunath Das Goswami. चैतन्य चरितामृत में हम लोग देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी को भाव के विषय में वर्णन किया गया है. And he is our Prayojana Acharya. Prayojana means the topmost goal. तो हमारे वो प्रयोजन आचार्य है जो कि हमारा एकदम उच्चतर सिद्धांत है जिनको प्राप्त करना है हमें. And two of them are exemplifying two amazing and very important Vaishnava qualities. तो वैष्णव के गुणों में जो दो मुख्य हैं उनको उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उजागर किया अपने जीवन में. Gopal Bhatta Goswami is the emblem of humility, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी विनम्रता के मूर्तिमान स्वरूप है. and Raghunath Das Goswami is the emblem of renunciation. और रघुनाथ गोस्वामी जी वैराग्य के मूर्तिमान स्वरूप है. And both of these qualities are extremely important in our spiritual development. और ये हमारी भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये दोनों ही. Perhaps this was the reason for choice of these two acharyas. मैं आशा करता हूँ कि ये शायद मुख्य कारण होगा इन दो आचार्यों के नाम चुनने के विषय में. And why do we say that Gopal Bhatta Goswami was the emblem of humility? क्यों मैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विषय में बोल रहा हूँ कि वो विनम्रता के मूर्तिमान स्वरूप है? Because when Krishna Das Kaviraj Goswami was collecting blessings from all the Vaishnavas for writing Chaitanya Charitamrita, he also approached Gopal Bhatta Goswami. जब कृष्णदास गोस्वामी जी सभी वैष्णवों से कृपा की भिक्षा कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास भी गए थे कृपा प्राप्त करने के लिए. For service, we always need blessings of senior Vaishnavas because only by their blessings we can do the service. तो सेवा करने के प्रारंभ में हमें अवश्य ही भक्तों की कृपा लाभ करनी चाहिए क्योंकि भक्तों की कृपा के माध्यम से हम उस सेवा का संपादन बहुत अच्छे से कर पाएंगे. And Krishna Das Kaviraj Goswami wanted to make sure that he gets blessings of all the senior Vaishnavas before he writes Chaitanya Charitamrita. और कृष्णदास गोस्वामी जी ये अवश्य ही मतलब देख रहे थे कि ये कार्य चालू करने से पहले सभी वैष्णवों की कृपा लेना अवश्य ही महत्वपूर्ण है. And Gopal Bhatta Goswami said, I give you my blessing, but I have one condition. तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने बोला कि मेरा एक आपके से विनय निवेदन है. And condition is, you do not glorify me in Chaitanya Charitamrita. Do not write about me. तो कंडीशन क्या है कि आप मेरी गुण महिमा नहीं कीजिए उस चैतन्य चरितामृत में. That's why Gopal Bhatta Goswami is only briefly mentioned as one of the branches of Lord Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु जी की एक शाखा के रूप में उनको बहुत थोड़ा ही वर्णन किया गया है जो जिसका कारण ये था. Even though he was very prominent acharya. और वो बहुत ही मुख्य एक प्रकार से बोल सकते हैं आचार्य थे लेकिन फिर भी उनके इस अनुरोध के कारण उनकी महिमा कम लिखी गई है. And even, another example of his, outstanding example of his humility, that apparently he was insisting, telling all the Vaishnavas, do not glorify me, don't write, he wanted to remain anonymous. तो सभी वैष्णव से अनुरोध कर रहे थे कि मेरा नाम नहीं लिखिए जिससे किसी को पता ही नहीं चले कि मैं भी कुछ एक प्रकार से मतलब था या एग्जिस्ट करता था ऐसा टाइप. And even though he was one of the greatest scholars amongst the 6 Goswamis, for example, he gave all the material for Sat Sandarbhas to Jiva Goswami. तो जीव गोस्वामी जी जो सठ संदर्भ लिखे थे तो उनकी मुख्य बोल सकते हैं कि सारा जो मटेरियल्स जो ज्ञान हो सकता है ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उनको दिए थे. इतने बड़े विद्वान थे. And we know that Sat Sandarbhas are one of the greatest works of Jiva Goswami. और हम लोग जानते हैं कि जीव गोस्वामी जी सठ संदर्भ लिखे एक बहुत बड़ा महान कार्य है. But all the material came from Gopal Bhatta Goswami.
लेकिन ये सारा जो बोल सकते मटेरियल है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के माध्यम से उनके पास आया था। And Jiva Goswami in Sandarbhas, he says, one learned Brahman from South India compiled all this material, but he was not systematic, so he gave me to systematize it. तो उन्होंने उनका नाम नहीं बोलने के कारण उन्होंने लिखा कि एक साउथ इंडिया दक्षिण भारत से एक ब्राह्मण थे, उन्होंने ये सब चीजें मुझे दिया और मुझे बोले कि इसको थोड़ा सिस्टमैटिक कर दो। And luckily from other sources we know it was Gopal Bhatta Goswami. और दूसरे माध्यम से लोग जानते कि ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी थे जिन्होंने ये सारे मटेरियल्स जीव गोस्वामी को दिए। But apparently he also forbade to Srila Jiva Goswami to mention his name. तो उन्होंने जीव गोस्वामी जी को भी बोला कि मेरा नाम वहाँ पे नहीं लिखना। So like that, it's amazing. Sometimes you get, great Vaishnava poetry, great Vaishnava songs, but there is no author. तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो वैष्णव गान हैं, लेकिन उसके अंत में आप कहीं नहीं पाएंगे कि इनके लेखक कौन थे। Because the mood of the Vaishnava, I don't want to be glorified. I want Krishna to be glorified. I want Vaishnavas to be glorified, because real Vaishnava is the one who never thinks that I am a Vaishnava. तो वैष्णव का यदि यहाँ पे गुण जो दिख रहा है कि वो कभी भी अपनी गुण महिमा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की गुण महिमा हो, उनके भक्तों की गुण महिमा हो, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा ही अयोग्य समझते हैं। Because the greatest, people have different attachments in this world, and as we know, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati in Vaishnava K says that the biggest attachment of the conditioned soul is pratishta, to desire to be glorified. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि एक बद्ध जीव की जो भौतिक अवस्था क्या होती है कि वो चाहता है कि मेरी बहुत ज्यादा गुणगान हो, मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनूं इस प्रकार से। I remember one class, our late Srila Sridhar Maharaj, ISKCON Sridhar Maharaj gave. तो हमारे जो श्रीधर महाराज थे, उन्होंने एक क्लास में ये बताया था। It was actually here in Mayapur. वो यहाँ पे ही वो क्लास देते थे श्रीधाम मायापुर में। And he said, everybody wants recognition, everybody wants fame in this world. सभी लोग चाहते हैं कि वो बहुत ही फेमस हो जाए, सभी लोग उनको जाने। Even some recluse living somewhere away in some cave, not associating with anyone. ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जो ऐसे बहुत निर्जन स्थान में रहता है, एक गुफा में रहता है। And still he is regularly looking out of his cave if some reporters are coming to take, his, interview from him. लेकिन उसके मन में ऐसे मनोभाव चलते रहते हैं कि अरे थोड़ा बाहर जाके देखे, कोई यदि पत्रकार आया हो उसको मैं कुछ बोल पाऊँ। This desire is so strong in conditioned soul. तो बद्ध जीव के अंदर ये जो इच्छा बहुत ही प्रबल है। Desire for fame, for recognition, for name. बहुत ही प्रतिष्ठित होना, बहुत फेमस हो जाना उसके मन में ऐसे रहते हैं। But only such pure devotees as Gopal Bhatta Goswami are completely devoid of it. लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त जैसे कि हम लोग देख रहे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी इन सभी चीजों से मुक्त थे। So, as we know from some sources which describe this great Acharya as Bhakti Ratnakar and other sources, Gopal Bhatta Goswami is coming from Tamil Nadu. He was born as son of Vyenkatta Bhatta in Srirangam. तो जैसे हम लोग जानते हैं भक्ति रत्नाकर और अन्य ग्रंथों के माध्यम से कि वो दक्षिण भारत में वेंकट भट्ट के पुत्र के रूप में इस धराधाम में अवतरित हुए थे। So, Sri Vaishnava for many generations, great Vaishnava, and actually Vyenkatta Bhatta was one of the head priests at Srirangam. तो हम लोग जैसे जानते हैं कि ये जो वेंकट भट्ट थे वो श्री संप्रदाय के में आते थे, उनकी कई पीढ़ियां इसी संप्रदाय में थी और हमें ये भी ज्ञात होता है कि वो एक मुख्य पुजारी थे श्रीरंगम में।
And as we know from Sri Chaitanya Charitamrita, those who've read it, when Sri Chaitanya Mahaprabhu was traveling in South India, he came to Sri Rangam and he was chanting and dancing, and he completely mesmerized everyone with his appearance and his ecstasy. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो जो भक्त लोग चैतन्य चरितामृत पढ़े होंगे कि चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए थे, स्पेशली जब यहाँ श्रीरंगम क्षेत्र, तो उन्होंने अपनी नगर संकीर्तन, अपनी कांतिमय छवि और अपने उत्साह और प्रेम प्रेम ये बोल सकते हैं, हरि नाम के माध्यम से कई लोगों को उन्होंने प्रभावित किया था. Of course, as a side note, it was very easy for Sri Chaitanya Mahaprabhu to impress anybody. तो चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत ही आसान था किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करना. Next time you go to Panchatattva Mandir to see our Panchatattva, you look at Sri Chaitanya Mahaprabhu, and I don't know how many of you realizing this fact, that the size of the deity is the life size of Sri Chaitanya Mahaprabhu. This is how tall he was. This is how large he was. तो जब आप लोग कल या जब भी अगली बार जब पंचतत्व मंदिर में जाएंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु का जब दर्शन करेंगे, तो आप जो विग्रह देख रहे हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु का, तो ये जो विग्रह जितना लंबा है, श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम में जब लीलाएं करते वो भी इतने ऊंचे लंबे थे. And the color of his skin was golden, exactly like our Gauranga Mahaprabhu in Panchatattva. तो उनके शरीर की कांति भी वैसे ही थी जैसे हम लोग अभी यहाँ पंचतत्व में श्री चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं. How many of you knew that the size of our deity is the life size of Sri Chaitanya Mahaprabhu? कितने लोग यहाँ जानते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु जी का जो हाइट है वो उस वक्त की हाइट के बराबर था? Not many devotees, so for many of you it's a big news. तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो आप लोग के लिए बहुत नया समाचार होगा. Just imagine, just for a second, that the deity of Sri Chaitanya Mahaprabhu walks into this pandal, even without any kirtan, without saying anything. What kind of, shock that would be for all of us, right? तो यदि आप जस्ट चिंता कीजिए कि चैतन्य महाप्रभु जी उस मंदिर से निकल के यहाँ पे इस पूरे क्लास में आ गए, हो सकता है कोई कीर्तन ना हो, फिर भी ये हमारे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य होगा. And so you can imagine, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the living deity like that, was traveling throughout, South India. What kind of impression he would, create. तो आप लोग सोच सकते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जो विग्रह हैं इतने लाइफ साइज जब दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे, तो किस प्रकार की क्रांति वो लाए होंगे वहाँ पे. What to speak of his chanting and dancing, that was on the top of that. What to speak of his embracing people and giving them pure Krishna prema just with one embrace. तो इनकी हाइट तो हम लोग बताएं, इसके साथ साथ चिंता कीजिए वो जब हरि नाम कर रहे होंगे, नृत्य कर रहे होंगे, और इसके ऊपर यदि वो किसी को आलिंगन करके उसको कृष्ण प्रेम दे रहे हो, तो सोचिए और कितना अद्भुत रहा होगा दृश्य. And so when Sri Chaitanya Mahaprabhu came to Sri Rangam, everyone dropped whatever they were doing, everyone ran just to see him. जब श्रीरंगम में चैतन्य महाप्रभु जी आए थे, तो सभी लोग जो जो कार्य में लिप्त थे, सभी चीज को छोड़कर तुरंत चले गए श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए. And when Vyenkatta Bhatta saw him, apparently, his spiritual realization was so deep that he actually recognized that he is Krishna. तो जब वेंकट भट्ट जब श्री चैतन्य महाप्रभु को देखे, तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति के कारण वो समझ पा रहे थे कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं. And he bowed down to Sri Chaitanya Mahaprabhu, and Sri Chaitanya Mahaprabhu embraced him. तो जैसे उन्होंने देखे चैतन्य महाप्रभु को, तुरंत उनको दंडवत प्रणाम किए, उनके पैर को छुए और चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन कर लिए. And Vyenkatta Bhatta was so ecstatic, and he wanted to do some service to Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो वेंकट भट्ट इतने उत्साहित हो गए, आनंदित हो गए कि वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना चाह रहे थे. And he was begging, please come to my house, stay as a guest. My house is yours, my family is yours, I am yours, please take everything. तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत अनुरोध करने लगे कि आप हमारे घर में रहिए, ये आपका ही घर है, ये परिवार आपका है, मैं आपका ही हूँ, मुझे कुछ सेवा का अवसर दीजिए. And Sri Chaitanya Mahaprabhu kindly agreed, and he stayed in
Srirangam for 4 months. और चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपा करके उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिए और उनके घर में वो 4 महीने तक रहे. Because these were the Chaturmasya period when traveling was difficult. तो ये जो 4 महीने था ये चातुर्मास का समय था जब यात्रा थोड़ी कठिन होती है. And traditionally renunciates, they stay for this period somewhere stationary. और साधारणतः हम लोग जो देखते हैं कि सन्यासी और जो वैरागी लोग होते हैं इस 4 महीने में एक नियत स्थान पे ही विराज करते हैं, यहाँ रुक जाते हैं. And somehow Srirangam, Vaishnavas and Vyenkatta Bhatta specifically, they got such a special mercy to host Sri Chaitanya Mahaprabhu for 4 months continuously. तो ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य था श्रीरंगम के भक्तों के लिए और स्पेशली वेंकट भट्ट के लिए कि उन लोगों ने 4 महीने तक श्री चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य लाभ किया, उनकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ उन्हें. And every day Sri Chaitanya Mahaprabhu chant and dance, and so many people, thousands and thousands of people from all over, they would hear him being in Srirangam, so they would be coming to have his darshan. तो बहुत हजारों लोग प्रतिदिन ही श्रीरंगम आते थे क्योंकि उन्हें ये खबर मिल गई थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु अभी श्रीरंगम क्षेत्र में है, तो प्रतिदिन आकर उनका दर्शन किया करते थे. And Vyenkatta Bhatta's house is quite nearby the temple. और वेंकट भट्ट जी का जो निवास स्थान था वो मुख्य मंदिर के बहुत ही नजदीक था. Few months ago we were fortunate enough to go to Srirangam and actually see Vyenkatta Bhatta's house. तो कुछ महीनों पूर्व हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग श्रीरंगम में वहाँ वेंकट भट्ट के घर गए थे और वहाँ दर्शन किए. And Sri Chaitanya Mahaprabhu had his own personal deities. They say that he carved them with his own hands, and these were Jagannath, Baladev, Subhadra deities. तो ऐसा बताया गया है कि उनके घर में जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की जो विग्रह है वो स्वयं वेंकट भट्ट जी के हाथों द्वारा बनाया गया है. And these are very unusual Jagannath, Baladev, Subhadra deities. और ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जो विग्रह है ये बहुत ही अद्भुत है. Any of you have seen those Jagannath deities personally worshipped by Sri Chaitanya Mahaprabhu? तो कितने लोगों ने यहाँ वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की विग्रह का दर्शन किया है जो वेंकट भट्ट जी ने बनाया था? Few devotees. तो कुछ भक्तों ने देखा है. Anyway, I can say one side story which is very interesting. तो मैं एक छोटी घटना बोलूँगा जो बहुत ही चमत्कारिक या विस्मयकारी है. Actually, those deities, being very, very old, nearly 500 years old, they were not in a good shape. They didn't look very good. तो वो जो विग्रह है वो लगभग बहुत पुराने हैं जिस कारण से उनका जो रूपरेखा बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है. Wooden deities, they required little repair and repainting. जैसे हम लोग जानते हैं कि जो लकड़ी के काष्ठ के विग्रह होते हैं उसको थोड़ा सा मतलब रिपेयर करना होता है और बीच बीच में उनको रंग चढ़ाना होता है. And somehow they found out that one group of Russian devotees is doing very nice repair work. तो उन्हें पता चला कि कुछ रशियन भक्त लोग जो हैं ये अच्छा बहुत मतलब विग्रहों की अच्छी कार्य करते हैं रिपेयर काम. But there was 2 problems there. लेकिन इसमें 2 समस्याएं थी. Because these are such famous deities, people would come every day for darshan. ये इतनी मतलब विख्यात विग्रह थी कि प्रतिदिन ही लोग इनका दर्शन किया करने के लिए आते थे. And second, in Srirangam, there are still some brahmanas with caste consciousness, and they would never accept, that someone was touching such historical deities without even being born in Bharat. Some foreigners would touch the deities. They would never accept it. तो वहाँ कुछ ऐसे ब्राह्मण भी थे जिनमें ये जात प्रथा की बहुत ही प्रधानता है. वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसे व्यक्ति आए और इस महत्वपूर्ण विग्रह को स्पर्श करे जो कि जिनका जन्म भारतवर्ष में नहीं हुआ है. But still, those devotees, the descendants of Vyenkatta Bhatta, they found out the way how to solve these 2 problems. तो जो वहाँ के ऐसे भक्त थे उन्होंने एक तरीका निकाला कि कैसे इस समस्या का समाधान
किया जाए. They requested these Russian devotees to make, how to say, replica deities made from some, paper, something like this, painted paper, put them on the altar and remove the original deities and then do all the work. तो उन्होंने भक्तों को एक उपाय सुझाया कि क्यों ना इसके कुछ नकल या कुछ ऐसा कुछ बना दिया जाए और वहाँ रख दिया जाए और जो विग्रह है उसको फिर ले लिया जाए और ताकि उसका रिपेयर कार्य किया जा सके. And so for the time of repair, these temporary deities were there, and no one could recognize that it was exchanged. तो जब तक ये विग्रहों की रिपेयर वर्क चल रही थी तब तक ये जो बोल सकते हैं कि दूसरे विग्रह का सेट था वो वहाँ पे रख दिया गया, तो कोई समझ भी नहीं पाया. But then the devotees did such a nice job with repair and painting and dressing that deities looked so different from like what they were looking before. I don't know how they explained it, but that suddenly one day they appeared in completely new image on the altar. तो जब भक्तों ने ये रिपेयर वर्क किया तो विग्रह को इतने अच्छे से बनाया, मतलब जो भी रिपेयर करना था उनको अच्छे से मतलब अंगराज किया और इस तरीके से उनको सजाया कि एकदम अद्भुत लग रहा था विग्रह देखने से. तो मुझे पता नहीं कि वहाँ के भक्त लोगों ने जब दूसरे दिन जब दर्शन के लिए आए होंगे तो उनको कैसे समझाया होगा कि ये वही विग्रह है जिनका दर्शन वो लोग प्रतिदिन किया करते थे. I got the pictures of those deities before and after. If any one of you like to say, I can show. It's mind-blowing difference. तो मुझे वो फोटो प्राप्त हुआ पहले का, मतलब रिपेयर वर्क से पहले और रिपेयर के बाद का. तो मेरे पास है, यदि आप लोग जिनकी इच्छा है वो मुझसे बाद में मिल सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ. Actually, just this morning I was thinking that some people might say that these lines in Gurvashtaka, Nikunja Yuno, Ratikeli Sidai, Yayalibir, Yuktira Pekshaninya, they cannot refer to our modern gurus, acharyas, so this is very high that Guru is making arrangements for Radha Krishna pastimes. तो बहुत लोग ऐसा लग सकता है कि जो निकुंज योन रति के लिए जो हम लोग बता रहे हैं कि हमारे जो आचार्य अभी जो लोग हैं वो हो सकते हैं कि उस लेवल में नहीं है, ऐसा मन में हो सकता है, प्रतीत हो सकता है हमें. But this is completely false because Srila Prabhupada, he established such a amazing high level of deity worship. I mean, those of you who joined the movement earlier, first time I came to Mayapur in 93, and I could see the difference in deity worship and deity standards in ISKCON and other temples. तो श्रील प्रभुपाद जी जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, उन्होंने इतना ऊंचा स्तर जो विग्रहों की पूजा का स्थापित कर दिया है कि आप लोग हो सकता है बहुत लोग इसको अनुभव भी किए होंगे. जैसे मैं यहाँ पे मायापुर में 1993 में जब आया था और जब मैं दूसरे मंदिर में जाता हूँ तो देखता हूँ कि विग्रहों की सेवा का जो स्तर है बहुत ही अंतर है जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है और बाहर के मंदिरों में. Because we did Navadvip Mandal Parikram 93, and I was surprised, all broken down temples, deities wearing some kind of, rags and looking very poorly on the altars, on all the temples. तो जब मैं 1993 में नवदीप मंडल परिक्रमा कर रहा था, तो जब मैं अन्य अन्य मंदिरों में जाता था और जब विग्रहों के दर्शन करता देखता था कि मंदिर पूरे टूटे हुए हैं और भगवान ने जो वस्त्र धारण किए हैं वो बहुत ही फटे पुराने हैं और देखने में कैसा ही लग रहा है कि बहुत दयनीय स्थिति है विग्रहों की. And some old pujari, in dirty clothes, trying to do some little puja, something, not very impressive. और जो वहाँ के पुजारी थे वो भगवान की पूजा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके जो वस्त्र थे वो बहुत ही गंदे थे. तो मतलब बहुत ही बोल सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड था बहुत नीचा लो था. And then you come back to ISKCON, shining Radha Madhava, so clean,
young, enthusiastic pujari is doing so much service. It's huge difference. तो उसके पश्चात आप सीधा मायापुर में आइए, विग्रहों को देखा, वो कितने चमत्कारी, कितने चमक रहे हैं, और जो पुजारी है इतने उत्साह से, एकदम नवयुवक पुजारी, तो कितना स्टैंडर्ड, मतलब बहुत ही एक अद्भुत बोल सकते डिफरेंस. But now, because of ISKCON's help and ISKCON's example and influence, the standards of all these temples, they also improved, mostly because ISKCON was, giving money, giving devotees, helping in all ways, etc. So ISKCON is uplifting the deity worship standard all around also, directly and indirectly. तो ISKCON के माध्यम से परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से, हर एक माध्यम से उन मंदिरों में हो सकता है, दान देने के माध्यम से, मंदिर के निर्माण के माध्यम से, हर एक तरीके से इन विग्रहों की सेवा का स्तर एक प्रकार से बोल सकते थोड़ा उठा है या उठ रहा है. And so, you can look on the altar, Shri Radha Madhava, Ashtasakhi, such an amazing standard of deity worship. And this is what Srila Prabhupada established, and this is what he encouraged, and all our present-day leaders, they maintain and they develop this standard. So this is Nikunjayuna Ratikeli Siddhi. This is exactly what Vishwanath Chakravarti Thakur explains, because deities are not different from the Supreme Lord. तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने जो ये स्तर दिया है, मानदंड दिया है कि अर्थ विग्रहों की सेवा कैसी होनी चाहिए, और हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है. और भी तो हम लोग ये देख सकते हैं कि निकुंजयन रति के लिए सिद्ध ये है, क्योंकि ये भगवान स्वयं यहाँ साक्षात मौजूद हैं और भक्त लोग उनकी इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं. And it's happening in all ISKCON temples all over Bharat and all over the world. Very, very high standards. तो बहुत ही उच्च मानदंड का जो विग्रह पूजा हो रहा है भारतवर्ष में और विदेशों में, ये बहुत ही उच्च स्तर का विग्रह सेवा है. And of course, how it is related to Gopal Bhatta Goswami, coming back to the topic. तो हम लोग अपने मुख्य विषय वस्तु पे आते हैं कि कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी से संबंधित है. Because when devotees came to Vrindavan, Srila Prabhupada said, go to Shri Radha Raman Mandir and learn standards from them, because their standards are the highest in all Braj. तो जब भक्त लोग आए थे तो श्रीला प्रभुपाद जी बोले कि राधा रमन मंदिर में जाइए और वहाँ के जो विग्रहों के जो स्टैंडर्ड्स है उसको जाके सीखिए, कैसे भगवान की पूजा आराधना की जाती है. And Shri Radha Raman, as we know, manifested himself from Salagram Shila by the strong desire of Gopal Bhatta Goswami. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राधा रमन जी की जो विग्रह है, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जो सालग्राम शिला थी, उसके माध्यम से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की बहुत तीव्र इच्छा थी, तो उनकी इच्छा के कारण ही वो स्वयं को प्रकटित किए इस रूप में. And this is the only deity which never left Vrindavan, because Radha Raman is so small. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ये मुगलों के समय ये सारे विग्रह जब टूट रहे थे और मंदिर को तोड़ रहे थे, तो सारे विग्रह दूसरी जगह चले गए थे. केवल और केवल ये जो राधा रमन जी की जो विग्रह थी यही सिर्फ वृंदावन में रह गई थी, क्योंकि इनका विग्रह का साइज छोटा था. And when Mughals were attacking Vrindavan and Braj and destroying the deities, killing, devotees, all the deities had to be shifted to Jaipur and other places to protect them, to Rajasthan. तो जब मुगल लोग आक्रमण कर रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, भक्तों की हत्या कर रहे थे, तो उस समय विग्रहों की सुरक्षा के लिए उनको बहुत सारे विग्रहों को जयपुर और राजस्थान के अन्य जगहों में भेज दिया गया सुरक्षा के लिए. But because Shri Radha Raman is so small that 12 inches, a bit over 30 centimeters, just 30 centimeters high, he could be easily worshipped without, in a very small room, but keeping all the standards intact.
तो जैसे हम लोग देखते हैं राधा रमन जी का जो हाइट 12 इंच का है, लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास, तो उसको बहुत ही मतलब छोटे जगह में भी आप विग्रहों की पूजा कर सकते हैं. And they maintained, almost 500 years since Gopal Bhatta Goswami disappeared, they still keep the same high standards as they were established by Gopal Bhatta Goswami. तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जाने के पश्चात आज लगभग 500 या उससे ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं, तो अभी भी विग्रहों की जो स्टैंडर्ड है अभी उसी प्रकार से मेंटेन की हुई है जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उन लोगों को दिया था. Any of you have been fortunate enough to try, they give little sweets if you give them donation, but any of you have been fortunate enough to try full lunch from Shri Radha Raman Mandir? तो आप लोगों से कितने लोग ऐसे भाग्यवान हैं जिनको ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि राधा रमन जी के यहाँ जो लंच प्रसाद प्राप्त करने का. Okay. डोनेशन देंगे तो हो सकता है आपको स्वीट देंगे. Few devotees are fortunate, तो yes. कुछ भक्त लोग ऐसे भाग्यशाली हैं जिनको इस अवसर प्राप्त हुआ है. And it's amazing how much love they have for Radha Raman, that this is first time I've seen that they take, huge pots and they bring the whole pot to the altar and offer it to Radha Raman. They take like whole bunch of tulsi leaves, they throw it into the preparation, and all these big preparations, they stand around Radha Raman. So everything, not just something, everything becomes Mahaprasad. तो हम लोग देखते हैं कि जब राधा रमन जी के यहाँ जाते हैं तो बड़े बड़े पतीले होते हैं, उसमें उन्होंने जितना बनाया सारे चीज लेके आ जाते हैं और तुलसी का बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा गुच्छा उसमें डाल देते हैं, और जब सारे चीजें भगवान को भोग लगाते हैं तो हर एक चीजें पूरा पूरा महाप्रसाद हो जाता है. So after taking this lunch, we became completely intoxicated. तो ये प्रसाद प्राप्त करने के पश्चात हम सभी लोग एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इंटॉक्सिकेटेड हो गए थे, नशाग्रस्त हो गए थे. Yeah, and probably not many of you know how high is the standard in Radha Raman. तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग नहीं जानते हो कि ये जो विग्रहों की सेवा का मानदंड कितना ऊंचा है वहाँ पे. They still use the same fire which was lit personally by the hand of Gopal Bhatta Goswami. For nearly 500 years, this fire was never extinguished. So they used this fire for cooking and for, doing pujas and everything. तो 500 साल पहले जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो अग्नि जलाए थे, वही अग्नि आज तक भी चली आ रही है, वो कभी भी बुझा नहीं है, और उसी अग्नि का इस्तेमाल वो भगवान के लिए भोग बनाने के लिए करते हैं और अन्य अन्य कार्यों के लिए भी उसी अग्नि का प्रयोग करते हैं. And just today at the opening of Yagyashala, you can see the Goswami from Radha Raman, so friendly and such a great well-wisher of ISKCON and giving donations for TOVP and everything. So Prabhupada always had very, very cordial relationship with Radha Raman pujaris. तो जैसा हम लोग देख पा रहे हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी का कितना बहुत ही घनिष्ठ संबंध था राधा रमन के पुजारियों के साथ, कि वो आज जो यज्ञशाला चालू हुआ तो वो लोग आए थे, बहुत ही उत्साहित थे, उन्होंने कुछ दान भी दिया, तो बहुत ही हमारे साथ उनका एक फ्रेंडली रिलेशन, दोस्ती का बोल सकते हैं कि संबंध है हमारा. So very sincere Vaishnavas, and Prabhupada said, learn high standards from them. तो लोग बहुत ही अच्छे भक्त हैं और श्रीला प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम लोग ये विग्रहों के स्टैंडर्ड उनसे सीखें. So we can say that we also owe to Gopal Bhatta Goswami, those high standards of worship which ISKCON maintains now all over the world. It's all thanks to Gopal Bhatta Goswami and Srila Prabhupada's encouragement. तो हम लोग बोल सकते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी के उत्साह और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हम लोग ऋणी हैं कि जिनके माध्यम से आज हम लोग ISKCON में ये स्टैंडर्ड मेंटेन रख पा रहे हैं, और इनका सारा जो श्रेय है बोल सकते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को ही जाता है. But of course we made a huge leap from Srirangam, where Lord Chaitanya came to Vrindavan
Radha Raman Mandir, so maybe we could bridge the gap, say what was happening in between. तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ी छलांग लगा दी, दक्षिण भारत से वृंदावन आ गए, तो इस बीच में और भी बहुत सारी घटनाएं हुई, तो हम लोग थोड़ा सा कम से कम उस विषय में चर्चा करेंगे. So very briefly, because we don't have so much time. तो हम लोग बहुत संक्षिप्त में बोलेंगे क्योंकि हमारे पास समय का बहुत अभाव है. So the son of Vyenkatta Bhatta, little boy Gopal, he was fortunate enough to associate with Sri Chaitanya Mahaprabhu, try his Mahaprasad. He got Mahaprabhu's direct blessings, and he loved Mahaprabhu, and Mahaprabhu said, "You will become great acharya. In time, you will go to Vrindavan and join my devotees and help me to fulfill my mission." ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु जी का उच्चिष्ट प्राप्त हुआ और चैतन्य महाप्रभु का बहुत सानिध्य प्राप्त हुआ, और चैतन्य महाप्रभु उनको बोले कि ठीक है, तुम अभी यहाँ कुछ दिन रहो, फिर कुछ समय आएगा तो तुम वृंदावन आना, और मेरी बहुत सारे योजनाएं हैं जिसको तुम्हें पूर्ण करना है. And so, Hare Krishna, Hare Krishna. And so Vyenkatta Bhatta actually told Gopal that you dedicate your life to Sri Chaitanya Mahaprabhu. But Sri Chaitanya Mahaprabhu said, you cannot join me until your parents are alive, because your parents are such wonderful devotees. You serve them your whole life. Only join me after they depart. तो वेंकट भट्ट गोस्वामी जी का पूरा समर्थन था कि गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा करें, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले कि वेंकट भट्ट और उनकी जो स्त्री हैं वो भगवान के इतने अच्छे भक्त हैं, तो जब तक वो इस धराधाम में हैं तब तक उनकी सेवा करो, उनके जाने के पश्चात ही तुम मेरी सेवा में आ सकते हो. And so Gopal Bhatta, who later became Gopal Bhatta Goswami, he followed strictly everything Sri Chaitanya Mahaprabhu said, and he was learning, and he got initiation from his famous uncle, brother of Vyenkatta Bhatta, Brahmanananda, who became later famous Brahmanananda Saraswati, also moved to Vrindavan. तो बाद में जब वो वृंदावन आए तो उन्होंने दीक्षा ली अपने, जो बोल सकते चाचा से, प्रबोधानंद सरस्वती, प्रबोधानंद सरस्वती, उनसे उन्होंने दीक्षा ली, जो उनके चाचा लगते हैं. Author of the famous Vrindavan Mahimamrita. वृंदावन महिमा जो पुस्तक है उनके लेखक बोल सकते हैं. And so he was greatly learned scholar. He taught Gopal everything. तो बहुत बड़े वो विद्वान थे, उन्होंने सब चीज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को सिखाया. And then after his parents departed, he came to Vrindavan. जब उनके माता पिता जब भगवत धाम चले गए तो उसके पश्चात वो वृंदावन आए. Sri Chaitanya Mahaprabhu already informed Rupa and Sanatan Goswami that Gopal Bhatta will be joining them. तो चैतन्य महाप्रभु जी रूप और सनातन गोस्वामी जी को पहले से बता दिए थे कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आएंगे वृंदावन. And after he came, they sent news that Gopal Bhatta Goswami had arrived. तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन आए तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी को संदेशा भेजा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन आ चुके हैं. And from Jagannath Puri, Mahaprabhu was very happy, and he sent Gopal Bhatta Goswami some of his cloth and his own seat. He sent to Vrindavan to Gopal Bhatta Goswami as a gift. Cloth and his seat. तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए उन्होंने अपने स्वयं के जो वस्त्र थे और एक सीट था जिसको उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को एज ए उपहार उन्होंने भेजा. And even until today, in Radha Raman Mandir, this Mahaprasad from Mahaprabhu is still worshipped. तो आज भी यदि आप लोग वृंदावन जाएंगे तो देखें कि ये दो जो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो प्रसादी हैं वो आज भी उनकी पूजा की जाती है. So from the beginning, Gopal Bhatta Goswami was helping Rupa Goswami with his worshipping Shri Shri Radha Govinda. तो राधा गोविंद जी विग्रह है, उनमें ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी मदद किया करते थे.
But Govinda Dev came to Rupa Goswami in a dream and he said, Gopal Bhatta Goswami has to have his own temple, his own worship. गोविंद जी रूप गोस्वामी जी के स्वप्न में आया और बोले कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को अपना स्वयं का विग्रह होना चाहिए, स्वयं का मंदिर होना चाहिए. And Sri Chaitanya Mahaprabhu came to Gopal Bhatta in a dream and he said, go to Nepal, go to Kaligandhaki, get some Salagram Shilas and worship them. और उसी वक्त चैतन्य महाप्रभु जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के स्वप्न में आए और बोले कि तुम्हें नेपाल जाना चाहिए, वहाँ गंडक नदी में जाओ और वहाँ से कुछ सालिग्राम शिला लेके आओ और उनकी पूजा चालू करो. So Gopal Bhatta Goswami went to Kaligandhaki, but he was very shy. He was thinking, am I qualified to worship like that myself? तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी कालीगंडकी वहाँ जब जाते हैं तो जब वो विग्रह लेने के मतलब सालिग्राम शिला, तो मन में उनके प्रश्न आने लगा कि क्या मैं योग्य हूँ इन विग्रहों की सेवा करने का. He was thinking maybe one shalagram, something like this. But when he was bathing in Kaligandhaki, every time he would take water, 12 shalagrams would jump into the bucket. तो वो सोच रहे थे कि ठीक है एक लेके चला जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी कमंडलू लेकर स्नान करने नदी में उतरते थे तो देखते थे कि 12 सालिग्राम शिला स्वयं अपने उस कमंडलू में आ गई. And he was putting them out and they would jump again. So 4 times like that. So then he realized all these shalagrams, they want to go to Vrindavan. तो वो 4 बार डुबकी लगाते हैं और चारों बार क्या करते कि सारे सालिग्राम शिला को नीचे गिराते, लेकिन जैसे ही गिराते फिर वो स्वतः उस उनके कमंडलू में आ जाते. तो समझ गए कि अच्छा ही सारे सालिग्राम शिला को मुझे वृंदावन ले जाना है और उनकी पूजा करनी है. Then he brought them back. तो फिर वो इन सारे सालिग्राम शिला को लेके वृंदावन आ गए. And one day it was Nrsimha Chaturdashi, and one very wealthy Vaishnava, he came and he was giving gifts to all the Goswamis, some crowns, some ornaments for the deities, some material for clothing. तो ये नरसिंह चतुर्दशी की घटना है. एक बहुत बड़े व्यापारी धनी व्यक्ति आए और जितने गोस्वामी थे उन सभी को भगवान के विग्रहों के जो आभूषण है, वस्त्र है, ये सब चीजें वो दे रहे थे. And Gopal Bhatta Goswami was thinking, I would love to also worship the deity because, Shalagram Shila you cannot dress like the deity, it is very limited what you can do to the Shila, for the Shila rather than the deity. तो उनकी इच्छा थी कि हाँ मैं भी विग्रहों की सेवा करूं, क्योंकि विग्रहों को आप समझ सकते हैं कि अच्छे सजा सकते हैं, बहुत सारी सेवाओं का अवसर है, लेकिन ये सालिग्राम शिला में मतलब सेवा का अवसर कम रहता है विग्रहों की तुलना में. And next day, when he came to worship his shilas, he saw that there is not 12 but only 11 shalagrams, and the main shalagram, Damodar shalagram, disappeared, and Shri Radha Raman appeared instead of shalagram. तो जब अगले दिन जब वो विग्रहों की सेवा के लिए सुबह आए थे तो देखे कि 12 जो सालिग्राम शिला थी उसमें जो सबसे बड़ा सालिग्राम शिला जो दामोदर शिला था वो वहां से गायब था और उसके जगह पे ये राधा रमन जी की विग्रह जो है आ गई थी. And the back of Radha Raman is exact shalagram marks, and some people who had doubts, they had opportunity to study Radha Raman very closely, and they could see certain things which are not possible to carve in any deity. तो ये जो राधा रमन जी की विग्रह है उनके पीछे में जो कुछ चिन्ह थे, तो जो लोग इस विषय वस्तु में एक्सपर्ट है, दक्ष है, वो लोग देख पा रहे थे कि जो निशान बने हुए उनके पीठ के ऊपर वो कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं बना सकता या किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित होना ये संभव ही नहीं है. For example, Radha Raman's mouth slightly open and you can see his teeth inside. जैसे कि आप लोग यदि राधा रमन जी की विग्रह को नजदीक से देखेंगे तो देखेंगे कि उनकी मुंह थोड़ी सी खुली हुई है और उनके दांत का भी दर्शन आप प्राप्त कर पाएंगे. So this is not possible to carve. How can you carve it like this? तो ये संभव नहीं कि इतनी छोटी विग्रह में आप उस प्रकार से मुख खोले और उसके अंदर दांत को आप बना पाए. So this, and everyone realized, okay, no one carved here. So Radharman appeared from Shalagram, self-manifest.
तो सभी लोग समझ पाए कि ये जो राधा रमन जी की विग्रह है, इनको किसी ने बनाया नहीं, ये स्वयं ही वहाँ पे अवतरित, मतलब उस प्रकार से आए हैं। And Rupa Goswami was very happy and he gave the name to this new deity, Shri Radha Raman. तो रूप गोस्वामी जी ये देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने इन विग्रहों का नामकरण किया श्री राधा रमन। The Krishna who makes Srimati Radharani very happy. कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी को बहुत ही आनंद प्रदान करते हैं। Or another meaning, Srimati Radharani makes Krishna very happy. So दूसरे यदि तरीके में देखा जाए तो राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही आनंद प्रदान करती है या खुशी देती है। they both make each other very happy. So Radha Raman. तो वो एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। And so Gopal Bhatta Goswami wrote compiled material for Hari Bhakti Vilas, and together with Sanatan Goswami they wrote this book. तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जैसे हरि भक्ति विलास के बहुत सारे जो उनके योगदान है इसमें, जिन्होंने मतलब बाद में जो सनातन गोस्वामी जी को उन्होंने पब्लिश किया। And he was a famous acharya. He had many disciples. तो बहुत ही फेमस आचार्य थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। But despite of his greatness, he was very humble and never wanted to be served or glorified. तो इतने महान आचार्य होने थे, मतलब थे, फिर भी ये बहुत ही विनम्र थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी इस प्रकार से पूजा करे, उनकी गुण महिमा करे। And so we only have 4 minutes left for Raghunath Das Goswami. तो हमारे लिए बस 4 मिनट है रघुनाथ गोस्वामी जी के विषय में बोलने के लिए। And of course, Chaitanya Charitamrita describes how he was the son of Govardhan Majumdar, very famous, wealthy man living in this area. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चैतन्य चरितामृत में कि गोवर्धन मजूमदार के पुत्र थे रघुनाथ दास गोस्वामी, जो बहुत अमीर थे उस वक्त। And how he met Sri Chaitanya Mahaprabhu and he tried to escape from home, and finally he managed to escape and he joined Sri Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri. तो हम लोग देखते हैं कि कैसे वो चैतन्य महाप्रभु से मिले और फिर वो घर छोड़ना चाहते थे, अंततः उन्होंने घर त्याग कर पुरी में जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलित हुए और उनकी सेवा करने लगे। But he became successful only after he got blessings from Nityananda Prabhu. तो इन चीजों में सफल हुए कब हुए? जब उनको नित्यानंद प्रभु जी की कृपा प्राप्त हुई। Only by the blessing of the Guru you can get Krishna. केवल और केवल गुरु की कृपा, उनके आशीर्वाद से ही हम लोग कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। And then he was showing such a great example of renunciation when he was in Puri, and Sri Chaitanya Mahaprabhu was very happy with him. तो जब वो पुरी में थे तो उन्होंने वैराग की चरम पराकाष्ठा को प्रदर्शित किया और इसको देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत ही आनंदित हुए। And after Sri Chaitanya Mahaprabhu departed from this world, he went to Vrindavan to join. Actually, he came to commit suicide because he was thinking, I cannot live without Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो जब चैतन्य महाप्रभु चल गए तो उनके मन में ऐसा मनोभाव आया कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं चैतन्य महाप्रभु जी के बिना नहीं रह सकता। But Rupa and Sanatan Goswami, they convinced him not to do that, but better to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu, continue his mission. तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी दोनों मिलकर उनको समझाएं कि ऐसा करना अच्छा नहीं है, आप चैतन्य महाप्रभु जी के जो मिशन है उसमें योगदान कीजिए, उनकी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। And Raghunath Das Goswami was, mitigating his pain of separation by speaking about Sri Chaitanya Mahaprabhu every day, giving classes. तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब का जो ये विरह का भाव था, तो उसको खत्म करने के लिए वो प्रतिदिन ही अपने क्लास में श्री चैतन्य महाप्रभु के गुण महिमा किया करते थे। And on the basis of these classes, Krishna Das Kaviraj Goswami, he compiled Chaitanya Charitamrita. तो उनके क्लास के माध्यम से जो चीजें उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताई,
उसका आधार बनाकर कृष्णदास कविराज जी चैतन्य चरितामृत लिखे हैं उन्होंने। Of course, using the diaries of Murari Gupta and Swarup Damodar Goswami as well. तो हाँ, हम लोग जानते हैं कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी और मुरारी गुप्ता के कर्चा थे, उनके माध्यम से भी उन्होंने कुछ संग्रहित किया चैतन्य महाप्रभु की लीला। It's very good when, the materials for research come from different sides, so you can compare, you can understand deeper what's going on and present it very nicely. तो जब आप कोई शोध का विषय करते हैं और आपके पास जो मटेरियल्स है अन्य सोर्स से आता है, तो आप उनकी तुलना कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसको और गंभीर तरीके से कि ये चीजें कैसे हैं, और उसको समझने के पश्चात आप एक सुयोजित संगठित होकर उसको लिख सकते हैं। And Raghunath Das Goswami is recognized as Prayojanacharya because he was the one who specifically highlighted the position of Srimati Radharani, especially in his Vilapa Kusumanjali. तो रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन के आचार्य हैं, क्योंकि उन्होंने श्रीमती राधा रानी और उनके भगवान के साथ जो अंतरंग संबंध है उसके विषय में जो लिखा, क्योंकि उनका जो भाव है भगवान को सेवा करने का उस मंजरी के रूप में। And he was, as we know, he was in charge of Radha Kunda development, and after he developed Radha Kunda with the money from one very wealthy merchant, he was, feeling so much separation, chanting on the banks of Radha Kunda, minimum 100,000 names, and offering so many obeisances to Vaishnavas and deities. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो विग्रहों की सेवा किया कर रहे थे और राधा कुंड में बैठकर कई 100,000 भगवान के दिव्य नाम लिया करते थे, और उनके माध्यम से ही जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राधा कुंड का पुनरुद्धार हुआ। And just one final story of Raghunath Das Goswami chanting japa on the banks of Radha Kunda. तो ये अंतिम लीला होगी जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विषय में बताऊंगा कि वो कैसे राधा कुंड में बैठकर जप किया करते थे। So he was feeling great separation, sitting on the banks of Radha Kunda chanting his japa. तो राधा कुंड में बैठकर वो बहुत ही विरह का अनुभव कर रहे थे और भगवान के दिव्य नामों का जप कर रहे थे। As we know from Srinivas Acharya's Sat Goswami Ashtaka, the mood of the Goswamis was He Radhe Brajadevike He Lalite He Nanda Sunakota. जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं श्रीनिवास आचार्य की गान के माध्यम से कि हे राधे हे ब्रज के देवी के ललिते, ऐसे जो विरह का भाव है किस प्रकार से वो प्रकट कर रहे थे। And so Raghunath Das Goswami was meditating like this, He Radhe, and chanting his japa, and suddenly he heard voices of some group of people coming towards Radha Kunda. तो जब वो इस विरह भाव में भगवान के दिव्य नामों का जप कर रहे थे, तो अचानक ही उन्होंने ऐसा कुछ ध्वनि सुना कि बहुत सारे लोग उसको हरा रहे हैं। And those voices, they were so special that all the hairs on his body stood on end. Suddenly, he felt surge of ecstasy. तो जैसे ही वो इन दिव्य ध्वनि को सुने, तो सुनने के पश्चात ही उनके जो बोलते हैं कि शरीर के जो रोए थे बहुत खड़े हो गए, जैसे बोलते हैं अष्टात्विक विकार में होते हैं उस प्रकार से। Because there, Hare Krishna, because there was one male voice, very, very deep voice. तो उसमें से जो एक आवाज था वो एक पुरुष का था जो बहुत ही गंभीर था, गहरा था बोल सकते हैं। Like rumbling of the clouds in the distance. जैसे बहुत दूर में किसी बादल की गर्जना हो रही है। And many young female voices, very, like silver bells, very nicely sounding female voices. और बहुत सारी स्त्रियों के ध्वनि भी सुनाई दे रही थी जो बहुत ही मधुर थी। And he opened his eyes, and sure enough, he saw it was Krishna with Srimati Radharani
and gopis, and they were coming to Radha Kunda for bathing because it was noontime. तो जैसे उन्होंने अपने आँख खोले तो देखे कि अरे राधा कृष्ण है, गोपियाँ हैं और ये दोपहर का समय है और वो लोग दोपहर के स्नान के लिए वहाँ आए हुए थे. And he was completely shocked. और जैसे ही वो देखे अचंभित हो गए. And Radha Krishna and the gopis, they entered Radha Kunda and they started playing in the water, the water fight, who will throw more water on each other. तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि राधा कृष्ण और गोपियाँ वो सभी लोग राधा कुंड के जल में नीचे उतरकर स्नान करने लगे. और स्नान क्या था, ये तो जल क्रीड़ा थी, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने का. And there was two teams. One team is Krishna and the other team Srimati Radharani and all the gopis, and they were throwing water at each other. तो जैसे हम लोग देखते हैं इसमें दो दल बन गए थे, एक था कृष्ण का दल और एक था राधा रानी और गोपियों का दल. और दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी का छिड़काव कर रहे थे कि कौन किस पे कितना ज्यादा पानी फेंक सकता है. But problem is that Krishna has very long and very large hands, and so he was throwing so much water on all the gopis that they could not resist. They had to back out. तो यहाँ पे एक समस्या है जो हम लोग देख पा रहे हैं कि कृष्ण के जो हाथ है बहुत लंबे थे और बहुत बड़े थे, तो जिसके माध्यम से बहुत ज्यादा पानी वो गोपियों राधा रानी के ऊपर फेंक रहे थे. तो वो लोग इसको उतना सह नहीं पा रहे थे और तुरंत ही वो लोग फिर उस पानी से निकल के ऊपर आ गए. And there was only one Srimati Radharani who tried to still fight with Krishna. तो गोपियाँ आ गई थी लेकिन राधा रानी पानी में ही थी और अभी भी कृष्ण का मुकाबला कर रही थी. But he was throwing so much water in her face that she had to turn her face away, and she turned her face towards the bank where Raghunath Das Goswami was sitting. तो जब राधा रानी देखी कि अरे कृष्ण तो बहुत ज्यादा पानी फेंक रहा है, तो वो अपने आप को थोड़ा पीछे मुड़ गई. जब पीछे मुड़ी तो उनका जो मुखमंडल था वो रघुनाथ दास गोस्वामी की ओर दिखने लगा. And Srimati Radharani looked at Raghunath Das Goswami and she said, Rati, why are you sitting there? Come and help me. तो जब श्रीमती राधा रानी ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी को देखे तो अरे रति तुम क्या कर रही हो, जल्दी आओ मुझे मदद करो. And Raghunath Das Goswami was shocked, and he looked at himself and he saw himself as Rati Manjari, as young, servant of gopis. तो जब राधा रानी ये बोलती हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब देखते हैं तो अपने आप को देखते हैं, अरे मैं तो परिवर्तित हो गया, मैं तो रति मंजरी हूँ, मतलब एक यंग जैसे गोपियों के जो सेवक उस प्रकार हैं. And he jumped and he started running to enter Radha Kunda. And suddenly he slipped and he fell. And when he lifted his head, everything disappeared. Radha Kunda was empty again. Noon and it's totally empty, no one's around. तो जैसे ही वो मदद के लिए आगे बढ़े तो उनका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गए. और पानी से जैसे ही उठे तो उठने के साथ देखते कि कोई नहीं यहाँ पे. तो फिर उसी प्रकार से दोपहर का समय है, कोई नहीं है वहाँ पे. So he continued crying in separation, chanting his japa. तो विरह में इस प्रकार से रोने लगे और अपने भगवान के दिव्य नामों में फिर से लग गए. So this is the way our acharyas were chanting their japa, not like us, little different. तो ये ऐसा मनोभाव है कि हमारे आचार्य लोग कैसे जप कर रहे थे विरह में और हमारा नहीं है वैसा. So thanks to Srila Raghunath Das Goswami and other Goswamis, we have Vrindavan, we have knowledge, we have holy places, we owe everything to them. तो रघुनाथ दास गोस्वामी और अन्य जितने गोस्वामी हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके माध्यम से आज हमें धाम प्राप्त हुआ, विग्रह प्राप्त हुए, मंदिर और वृंदावन के सारे तीर्थ स्थल प्राप्त हुए. My apologies for a little delay, but I hope it was a little bit useful. मैं क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा लेट हो गया इसके लिए. Thank you all very much. Hare Krishna. Srila Gopal Bhatta Goswami Ki Jai. Srila Raghunath. Hare Krishna. Srila Raghunath Das Goswami Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bo.